So in the last lecture, we have started the pile foundation. In case of pile foundation, what we have discussed earlier, that is the necessity of pile foundation, pile installation, how we can install the pile, how we can drive the piles. We have also talked about how we can determine the load carrying capacity of piles. Single pile, actually, we have discussed about the how we can calculate the load carrying capacity of a single pile. So for that, different formulas are there and different methods are there. For example, we have talked about dynamic formula, static formula, pile load test, penetration test. Pile load test, penetration test we have not discussed, but the static pile load formula and the dynamic formula we have discussed earlier in the last lectures. So today, our today topic is three topics are there. See, before that, we have also discussed about the negative spring friction. See, if the friction is going to work in upward direction, we can say it is a positive friction. And if it is working in the downward direction, we can say it is a negative friction, depending upon the type of soil. The positive and negative frictions occurs. So today we are going to talk how we can determine the load carrying capacity of a group of piles. Suppose more than one piles is there, more than two piles are there. In that case, how we can find out the load carrying capacity of a group of piles? The first topic. And second topic is also we are going to talk how we can find out how we can determine the settlement of a pile, group of piles. How much settlement, how we can calculate the settlement. And the third points we are going to talk today, that is the underrimmed piles. So these three topics are there. So let us begin now. Group action of pile. See, group action of piles means whenever we are going to drive the piles, whenever we are going to drive the piles or push the piles, sometimes the piles does not go completely vertically inside the ground. Piles gets inclined, टेढ़ा हो जाता है. It does not go directly vertical. It may tilt also. So, uh, so in that case, what is going to happen? As I told you, when we are going to drive the piles below the column foundations or wall foundation. See, wall foundation is nothing but it is called as continuous footing or ST footing. So this is the example of the ST footing, and this is the example we can take as a column foundation also we can consider. So you can see what is going to happen if you are not going to drive the piles vertically. In that case, what will happen? Suppose there is a chance of eccentricity वहां पर जनरेट होगा. जैसे मान लीजिए कोई भी आप पाइल ड्राइव करते हैं तो उसके ऊपर जो आपको कॉलम बनाना है, अगर सेंटर में पाइल नहीं होगा तो एक्सेंट्रिसिटी डेवलप होगा और उसके चलते बेंडिंग स्ट्रेसेस आर आल्सो गोइंग टू डेवलप in between the connection. What do you mean by the connection? See, let us take the examples here, then we shall understand. See, these are the number of piles are there. So, number of piles are there. Above that, we are going to join all the piles with the pile cap. It is pile cap in nothing, but it is a slab only. एक स्लैब से हम लोग सबको जोड़ देते हैं. Then पाया ऊपर खड़ा करते हैं. Above that, this is the pyre cap, and then above that we can go for the superstructure or the bridges also. Whatever the construction we need, we can construct above that. So everything is written there. So that's why what it says that suppose we want to install piles for the column foundation. अगर वहाँ column foundation की जरूरत है, and we have already discussed that in what conditions the piles are required. That is the necessity of pile foundation. So in case of column foundation, minimum 3 piles in triangular we have to drive at one location. 3 पाइल मिनिमम हम लोग को ड्राइव होना चाहिए, क्योंकि एक पाइल टेढ़ा हो गया, दूसरा पाइल बगल में है तो उसको रोकता है. और उसके ऊपर हम लोग पाइल कैप इन पाइल स्लैब कहते हैं उसको. पाइल स्लैब देते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. दूसरा पॉइंट्स है कि सपोज यू आर गोइंग टू ड्राइव द पाइल्स फॉर वॉल फाउंडेशन. कुछ ऐसी जगह है वॉल फाउंडेशन बनाना है और उसके नीचे हमको पाइल ड्राइव करना है.
So the piles should be driven in the staggered forms. Staggered arrangements means what? Suppose this is the continuous footing. 1 minute. The cursor is visible. Cursor. Yes, sir. Okay. So this is Yes, sir. this is the ST footing or continuous footing or wall footing. So what the last paragraph says that if you want to install the piles below the ST footing or continuous footing, it should be in a staggered form. Staggered form means एक फाइल हम यहाँ ड्राइव करेंगे तो दूसरा फाइल इस साइड में ड्राइव करेंगे, फिर तीसरा उस साइड में ड्राइव करेंगे, फिर इस ड्राइव में ड्राइव करेंगे. Likewise, we should drive the files in the staggered form so that the eccentricity will not arise. Eccentricity नहीं होना चाहिए. Otherwise, connections for corrections जो है corrections can may fail due to the bending stresses. So these are called as group action of files. How the files which are available in groups going to have impact on the structure. So these are some introductory parts we are going to talk now. See what it says that the loads to the pile group are transferred through a reinforced concrete slab. Reinforced concrete slab is nothing but it is the pile cap. So this is the group of piles. Here I have shown you 3 piles. So all the piles are going to be connected by the slab. The slab is itself called as pile cap. And above that, we can construct the column or whatever the structure you want to construct. So it is written there tied. Tied means this slab is used or pile cap is used to tie all the piles together. सबको एक साथ जोड़ देते हैं इसको. So that the whole piles will work as a group of a piles. एक ही साथ काम करता है, सभी एक ही साथ लोड लेता है. That's why it is written here. The whole piles act as one unit. The whole piles, whole group acts as a one unit. So now we can see that, as I told you, that the slab itself called as a pile cap, and this pile cap distribute the loads of the superstructure or the load of the structures uniformly over all the piles. It distribute the loads uniformly. See, this next point we shall see here. See the spacing of piles. See, we are going to drive the piles, but spacing should also be decided. If you are not going to decide the spacing, what problem will arise? I will tell you in the next slide. So you can see the spacing of files in a group depends upon a number of factors such as overlapping of stresses. Overlapping of stresses क्या होता है मैं आप लोग को बताऊंगा. Due to the adjacent piles, cost of foundations, and desired efficiency of a pile groups. How much efficiency you want from a pile group? Efficiency मतलब ये हुआ 100% efficiency means the whole pile is going to take the load of the structure. That means the reduction is not there. Efficiency means we can also say the reduction factor, or we can say the 100% efficiency, 90% efficiency. The pile group is going to take the load of the structure. So that is called efficiency. One point you can see here. स्ट्रेस आइसोबार और प्रेशर बल्ब हम लोग ने पढ़ा है. स्ट्रेसेस ड्यू टू अप्लाइड लोड चैप्टर में पढ़ा है. सपोज दिस इज अ पाइल, single pile, and you are going to apply the point load. So what is going to happen? The soil which is available surrounding this pile will fill the stresses, and we can plot the contour lines. That is nothing but the equal stresses are going to join together. So at different points, all the stresses are equal, so we can join together. These are called as stress isobars or pressure bulb. This we have also studied in the chapter stresses due to applied load. So now we shall see, these are some introductory parts we are discussing now. That also we have to know here. When piles are driven in a groups, there is a possibility of stress isobars of adjacent piles overlapping to each other. What do you mean by overlapping to each other? You can see the figure. जैसे पाइल्स आपने ड्राइव किया, एक तो यहाँ ड्राइव किया, एक यहाँ ड्राइव किया, एक यहाँ ड्राइव किया. फॉर एग्जांपल, अगर स्पेसिंग, सपोज यू आर नॉट गोइंग टू मेंटेन द स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग, it is going to be driven nearby to each other. In that case, what is going to happen? This is the stress isobar going to be generated by this pile, and the stress isobar is going to be generated by this pile. So you can see this is going to overlap to each other. Overlap to each other means here this shaded part is going to create more over stress. Over stress create होने जा रहा है. तो इस एरिया का मिट्टी जो है नीचे जा सकता है, shear failure हो सकता है. That's why proper spacing is always required, so that
the isobars should not overlap to each other, match to each other, or it should not overlap. ये अलग अलग होना चाहिए, सभी स्ट्रेस आइसोबार अलग अलग होना चाहिए. Now we can see this figure, we can also see here a stress isobar which is going to be formed by the different piles से इस pile से जो stress isobar is completely different. You see, it is overspacing is not there. You can mute yourself. Some background noise is also going to come. So is it clear? You people have to listen carefully. Yes, Listen sir. carefully. Clear. Very difficult to understand also. So keep concentrations and listen carefully. You see that if the piles are going to be driven at the not at the proper space, the overstations are going to generate, and this soil is going to experience or going to feel the shear failure. That's why proper spacing is required so that the isobars will form separately. It should not overlap to each other. So spacing is very important parameters for the pile groups. We can see here, it is written there, overlapping might cause failure either in shear or by excessive settlement because this shaded part is going to overstress. तो यहाँ shear failure हो सकता है, ये मिट्टी यहाँ का नीचे जा सकता है, तो नीचे जाने का मतलब पूरा whole structures को collapse कर सकता है. So how we can control this one? Possibility may be avoided by increasing the spacing as shown in the figure C. So we can increase the spacing. Now, another disadvantage is there. Suppose you are going to increase the spacing not in a proper way. ऐसे ही आप बढ़ा देते हैं. So in that case, what is going to happen? The width, the dimension of the slab is also going to increase, and unnecessarily the cost of the slab will be more. It is written there, pile cap would increase the overall cost of the foundation. जैसे आपने स्पेसिंग ज़्यादा बढ़ा दिया, कितना स्पेसिंग बढ़ाना चाहिए, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. सो ये क्या होगा कि दोनों को जो पाइल कैप या स्लैब से हम जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से क्या होता है कि इसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है. उतना ही स्पेसिंग होना चाहिए ताकि हमारा स्लैब जो है ऊपर जहाँ ज्वाइनिंग या पाइल कैप जो है उसका भी डायमेंशन कम हो तो कॉस्ट हमारा कम होगा. Now we shall see the next points. How we can calculate the group efficiency of a pile. Suppose you are going to drive the piles at one location in a group forms. So in that case, how we can calculate the efficiency, how much efficiency we can get from a group of a piles, and how we can calculate that the group efficiency means we can say that how much load is going to be carried out by the pile group. So we can see here group efficiency, this formula is also very important for the numerical point of view. Group efficiency is the ratio of the ultimate load of the group. That means the load taken by the group of piles divided by sum of the individual ultimate loads taken by the each piles. इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पाइल्स के द्वारा जो लोड लिया जा रहा है उस लोड को अगर हम एक पाइल यदि लोड ले रहा है मान लीजिए 5 टन और 10 पाइल एक जगह हम ड्राइव किए हुए हैं तो 10 × 50 हो गया 50 टन. तो फिर दिस अगर ये हो रहा है ग्रुप मिला करके ग्रुप को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम बताएंगे आगे आप लोगों को. सो अगर ग्रुप का लोड अगर 60 टन है एंड दिस इज गोइंग टू गिव 50 टन, सो 60/50 into multiply by 100 is called as group efficiency of the piles. So group efficiency QGU divided by NQ, N is the number of piles and QU is the load carried out by the single pile. So number of piles multiplied by the load carried out by the single pile, we can divide with the total group of the load taken by a pile group. That is, then we can find out the efficiency of pile groups. So this we can also write here. QGU divided by N divided by QU into 100. So everything is written there. QGU क्या ultimate load of the groups, total group के द्वारा कितना लोड लिया जा रहा है और QU क्या है कि एक पाइल के द्वारा कितना लोड लिया जा रहा है. तो ग्रुप एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग. सो ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ द पाइल्स किस किस बातों पर निर्भर करता है. The length of the piles, diameter of the piles, and which materials your pile has been constructed by,
or the manufactured by the which materials, whether it is timber piles or the concrete piles or the steel piles. So it also depends upon the materials. How much a pile can take the loads, it depends upon the diameter, length, and materials. So a spacing of piles, the spacing is also very important. How much spacing we should have in between the two piles. Otherwise, overstressing will work. Overstressing will form. And due to the overstressing, the settlement and the shear failure will cause in between the piles. So now the types of soil in which the piles are installed or driven. What is the type of soil? That is also important parameters. Whether you are going to drive the piles in cohesionless soil, that means sandy soil, or the clay soil, that is also going to influence the load carrying capacity of a pile. So total number of piles in rows and number of rows. कितने जो हैं रोज हैं और कितने एक रोज में कितने पाइल्स हैं, इस पर भी निर्भर करता है. So ideally the spacing should be, we have to maintain the spacing of a piles in such a way so that we can get 100% efficiency. 100% efficiency means पूरा लोड ले सके. कोई ऐसा नहीं है कि हमने 10 पाइल एक जगह ड्राइव किया है तो ऐसा नहीं कि 10 में से 9 लोड ले रहा है और एक नहीं ले रहा है. इस तरह से नहीं होना चाहिए. इनफॉर्मली उसको ड्रिवन होना चाहिए. स्पेसिंग भी सही मेंटेन होना चाहिए. एक दूसरे से कोरिलेशन होना चाहिए. देन ओनली वी कैन गेट द 100% efficiency. So generally what it says that the center to center spacing is kept between 2.5 and 3.5 B, where B is the diameter of the pile. 2.5 B और 3.5 के बीच अगर स्पेसिंग रखते हैं, जैसे मान लो कि डायमीटर हमारा एक पाइल्स का अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2.5, दैट मीन्स 2.5 मीटर. That means the spacing in between the two piles should be 2.5 meter, which may go up to 3.5 meter. Agar width of the or diameter of the pile diameter, suppose pile is circular, so and diameter is 1 meter. So in that case, the spacing may vary from 2.5 meter to 3.5 meter. Am I clear? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. So now we shall see here. I will show you some figure also so that you people understand it. So now we are also going to come on the main topic, how we can determine the load carrying capacity of a group of piles when you are going to drive the piles in the sandy soil or clay soil. You can see these figures, how the piles have been driven in a group forms. Here one group is here, another group is here, another group is here, और पूरा मिट्टी हटा करके और सारा जगह पाइल ड्राइव किया हुआ है. हो सकता है कि इस पाइल जो दैट मीन्स दिस इज डीप फाउंडेशन. अबव द डीप फाउंडेशन वी कैन ऑल्सो गो फॉर द शैलो फाउंडेशन. अब यहाँ पर हम लोग स्लैब से पूरा इसको कनेक्ट कर दें और इस स्लैब के ऊपर हम लोग बीम बना दें तो हम कह सकते हैं कि शैलो फाउंडेशन अबव द डीप फाउंडेशन. पाइल के ऊपर हम शैलो फाउंडेशन बना सकते हैं, राफ्ट फाउंडेशन बना सकते हैं. राफ्ट इज ए शैलो फाउंडेशन. Here you can also see that how the piles have been driven. This is the steel pile in H shape. So how we can determine the group capacity of pile? We shall see some formulas are there. Pile group in sand and gravel. Normally what happens, if the soil is sandy or gravelly, definitely the friction will also be very high along the periphery of the piles. So in that case, the friction, it will also work as a friction file. So it can take more load. That means group efficiency will be very high, we can say. The next we can see, whenever you are going to drive the piles drive करते हैं तो क्या होता है, lateral displacement के चलते हम लोग पढ़े हैं कि मिट्टी कंपैक्ट भी हो जाता है साइड से. अगर मान लीजिए यहाँ पाइल हमने ड्राइव किया तो बगल का जो मिट्टी है वो भी आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट के चलते पूरा डेंसिफाई हो जाता है, कंपैक्ट हो जाता है. सो दैट बेनिफिट इज ऑल्सो देयर. It is written there, the soil between the piles is compacted due to the vibration caused during the driving operations. For better results, what it says that जब भी पाइल हम लोग ग्रुप में ड्राइव करते हैं, one thing we should take care of, we should suppose we want to drive 10 piles or 15 piles at one point. So in that case, we have to drive first piles in the center, then outward directions. यहाँ पर ड्राइव करते हैं, उसके बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर, तब हम लोग that is called as good method of pile driving or pile installation. That's why it is written here.
For better results, it is essential to start driving the piles at the center and then work outwards. So now we can see, I have shown you so many figures for your understanding. So now we shall see the end-bearing piles actually. End-bearing piles, as we know, the end-bearing means the load taken by the end of the piles. See, we are discussing about the pile group. A pile group, हम लोग ये देखिए, हम लोग को ये आपको जो 3D व्यू जो दिखाया हुआ है, आपको देखिए सब piles driven, piles are driven here, and these are the spacing in between the two piles. सभी piles के बीच spacing maintain किया हुआ है. तो ये पाइल्स ग्रुप का मतलब ये हुआ कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पाइल्स मींस द होल ब्लॉक इज गोइंग टू टेक द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर. वो कितना लोड लेता है, सभी मिल करके कितना लोड लेते हैं. तो हम लोग ने ग्रुप इफिशियंसी क्या पढ़ा था ऊपर वाले स्लाइड्स में. हमने पढ़ा था कि वी कैन कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पाइल्स और ग्रुप ऑफ द ब्लॉक. वी कैन से इसका डायमेंशन हमको अगर लेंथ और विड्थ पता है, हाइट पता है, तो ग्रुप का कैपेसिटी पता कर सकते हैं कि कितना लोड ले सकता है. एक ब्लॉक मान लें इसको. और दूसरा कि एक पाइल कितना लोड लेता है और कितने नंबर ऑफ पाइल्स हैं, तो टोटल ग्रुप ब्लॉक कितना लेगा और अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद कितना लेगा. देन वी कैन मल्टीप्लाई बाई 100. दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप इफिशियंसी ऑफ ए पाइल्स. हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री को प्रीवियस स्लाइड्स में. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एंड बियरिंग पाइल्स. You can see here for driven piles in dense compact sand with a spacing equal to or greater than 3b. S is the spacing. If the spacing is greater than equal to 3b, the group capacity is generally taken equal to the sum of individual capacity. That means what? How we can calculate the group capacity in case of end-bearing piles, right? When the piles are going to be driven in the cohesionless soil, how we can calculate the total the group load carrying capacity of a group of piles. That means we shall find out the load carried out by the one pile multiplied by the number of piles. This is called as the load going to be carried out by the group of the piles, we can say. But spacing, this spacing should be maintained. So this it is written there. Now in this case the load taken by the group is much greater than and the piles fail as a individual piles. That means what? कहता है what it says that इस स्थिति में अगर हम लोग ये स्पेसिंग मेंटेन करते हैं तो 100% से अधिक इफिशियंसी हमको मिलने की संभावना होती है. इस ब्लॉक पाइल अधिक से अधिक लोड ले सकता है. लेकिन यदि किसी कारणवश अगर पाइल फेल करता है तो फिर अलग अलग पाइल डैमेज होगा. पहले ये पाइल टूट सकता है या कोई बीच का टूट सकता है, सब नहीं एक साथ टूटेगा. तो इससे क्या होगा कि नुकसान कम होगा हमारा. तो इस तरह का हम लोग कह सकते हैं कि अगर फ्यूचर में फेल करता है तो इट फेल्स इंडिविजुअली, नॉट होल ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू फेल टुगेदर. So that point also we have to know. For spacing less than 3b, the group capacity is found to be block of a pile groups and failure takes place in the form of a block. What does it mean? यहाँ कह रहा है कि यदि स्पेसिंग s अगर 3b से के बराबर है या 3b b द डायमीटर ऑफ द पाइल्स, तो अगर ज़्यादा है या बराबर है तो उस स्थिति में हम लोग इंडिविजुअल पाइल्स के आधार पर हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी ग्रुप का निकाल लेते हैं यदि स्पेसिंग इतना है. लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर स्पेसिंग कम है, 3b से कम है, इन दैट केस वी कैन कंसीडर द होल पाइल एज ए वन ग्रुप एंड देन वी कैन कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल. तो आगे हम लोग देखें. दिस इज द सेक्शन वी कैन से दिस इज द एलिवेशन, 3D elevation also we can consider. For understanding, I have given this figure to you people. So now we shall see the next point. Friction piles. So suppose the pile is going to take only end bearing piles. You are going to find out the load carrying capacity of end bearing piles. The previous slides, the idea we can consider QG is equal to NQU. And that idea we can consider in case of end bearing piles. But in case of friction piles, what we have to do? The same formula you are going to use. The eta G is equal to QGU divided by NQE into 100. And here, in case of friction piles, one important thing is there that we have to understand. Friction piles में हम लोग क्या पढ़ा है कि the friction which is going to act along the periphery of the pile group के चारों तरफ जो friction काम करता है उसका भी importance है लोड लेने में. हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं. So how we can write this formula here? See, QGU means
the ultimate load carried out by the group of the piles. टोटल पाइल्स के द्वारा कितना लोड लिया जाता है डिवाइडेड बाय सिंगल पाइल के द्वारा जो लोड लेता है उसको नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई करके हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं. लेकिन हाउ वी कैन राइट दिस फॉर्मूला इन दिस वे? सी एफएस इज द फ्रिक्शन रेसिस्टेंस एक्टिंग अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द ग्रुप ऑफ पाइल्स. पूरा ब्लॉक के चारों तरफ जो फ्रिक्शंस है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं. पीजी मीन्स पेरीमीटर ऑफ ए ब्लॉक, चारों तरफ का ब्लॉक का पेरीमीटर, into D is the length or depth of the piles, and here N is the number of piles. Again, friction, this friction we have to consider along the periphery of the single pile, along the periphery of the single pile, and P is the perimeter of the single pile, and the D is the length of the piles or length of the single pile also you can say. So this formula also we can write like this way. Sorry. So now we can see further. If the center to center spacing is large, the group efficiency may be more than 100%. The piles will behave as individual piles and group capacity is obtained by individual piles. का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? जैसे हम लोग पूरा पाइल्स है, अगर 10 पाइल्स एक जगह आपने ड्राइव किया है तो चारों तरफ ब्लॉक मिलकर के एक सिंगल पाइल के रूप में काम करता है. एक ब्लॉक ही एक सिंगल पाइल के रूप में काम करता है. That's why it is written there. It behaves as individual piles. So now we can calculate the load carrying capacity of a group of piles is equal to load taken by one pile multiplied by number of piles. Here also the same formula we can use. If efficiency is less than 100%, in that case the load carrying capacity of the piles के लिए यही फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं. QGU is equal to efficiency हमको पता होना चाहिए और load carrying capacity of a single pile multiply number of piles, then we can find out the ultimate load carrying capacity of a group of piles. So these two things are there, end bearing piles and the friction piles. How we can determine the load carrying capacity of a piles in cohesionless soil, right? So now we shall go for the piles groups in clay. How we can determine when the piles are going to be driven in the clay soil? In that case, how we can find out the load carrying capacity of a group of piles? So here we can see what is written there. The first paragraph we can see here. The pile groups act as a block. पूरा ब्लॉक के रूप में काम करता है. 3D पिक्चर में हम लोग देखा था पिछले स्लाइड्स में. And the base resistance means end bearing and the shaft resistance means friction resistance of the block. ब्लॉक के चारों तरफ जो फ्रिक्शन काम करता है और ब्लॉक के जो बॉटम पार्ट का जो इंड जो है दैट इज बेस रेसिस्टेंस, वो बेस कितना लोड लेता है, ये दोनों को मिला करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो हियर द स्पेसिंग गाइडलाइन इज आल्सो देयर. द कैपेसिटी ऑफ द ब्लॉक हैविंग द क्लोजली स्पेस्ड S should be less than or equal to 3B, right? And then we can use this formula. This formula is also very, very important for the numerical point of view. We shall also discuss tomorrow some numericals. So ultimate load carrying capacity कितना, load कितना होगा, stress into area of the group of piles, and this QP is a stress at the bottom of the piles, and alpha is the adhesion, C the cohesion, and PG is the perimeter of the group multiplied by D the height of the group piles we can say. So QP point resistance, QP कैलकुलेट्स करने के समय NC भी हमको जरूरत पड़ेगी. NC का वैल्यू 9 यूज करेंगे सर्कुलर और स्क्वायर फुटिंग के लिए, स्क्वायर शेप के लिए. AG एरिया ऑफ द बेस एरिया ऑफ द ब्लॉक and perimeter of the block. PG is the perimeter of the block. D is the depth of the block or the height of the block also we can say below the ground level. Alpha is the adhesion factor and C the undrained cohesion. So ये फार्मूला हम लोग का इस्तेमाल करते हैं क्ले सॉइल्स में. अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है कि हाउ मच ए ग्रुप ऑफ पाइल्स कैन टेक द लोड, वी कैन यूज दिस फार्मूला. दिस आल्सो यू हैव टू रिमेंबर. सो सी द इंडिविजुअल, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इसको ग्रुप के रूप में इस फार्मूला से निकालते हैं और दूसरा हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं इस तरह से इंडिविजुअल पाइल कैपेसिटी. दिस इज द ग्रुप कैपेसिटी द ब्लॉक के रूप में हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं. देन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट इंडिविजुअल कैपेसिटी के रूप में निकालते हैं. सो Q इज इक्वल टू QP इंटू AP. AP इज द नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द AP इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एट द बॉटम ऑफ द पाइल, राइट. क्रॉस सेक्शन एरिया बॉटम सिंगल पाइल के रूप में, क्योंकि इंडिविजुअल पाइल कैपेसिटी कर रहा है.
C cohesion हो गया, P is the perimeter of the individual pile और D is the depth of the piles और length of the piles हम लोग यहाँ कर सकते हैं. So now the group capacity we can find out, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी हम इससे निकालेंगे और टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए इससे जो आपने जो वैल्यू निकाला उसको हम लोग यहाँ लिख करके नंबर ऑफ सिंगल पाइल से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये इससे हम लोग निकालते हैं, एक बार ब्लॉक के थ्रू निकालते हैं और एक बार सिंगल के थ्रू निकालते हैं. दोनों में देखते हैं कौन वैल्यू लोअर है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए पाइल ग्रुप इन द क्लेस. तो दिस इज द आइडिया. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है अभी तक तो सब सही है. यस. तो इसको आप लोग को थोड़ा सा घर पर भी पढ़ना है कि हाउ वी कैन we have to understand how the process is there. So pile groups in clay, pile groups in sand. So these are the idea. Now we shall see some other methods are also there. Other methods. These methods are also important for your numerical point of view. So what we have studied and what are the various numericals, what are the formula on which the numericals are asked, the dynamic formula, static formula for the single piles, and the load carrying capacity of a group of piles, that also we have discussed in the previous slides. Now some other methods are also there which are also utilized to determine the load carrying capacity of a group of piles. So for this many researchers have given the idea. The first one is the Field's rule. Field's rule, what it says that you have to understand the figure. आप लोगों को ध्यान से समझना है. It is very easy. So Field's, what Field says, suppose the 3 piles are there. Here 3 piles are there. Here 4 piles are there. 3 pile group. So how we can calculate the load carrying capacity of the 3 piles? QG. QG is the load carrying capacity of the 3 piles. कितना ये तीनों पाइल मिलकर लोड लेता है? तो फेल्ड्स ने क्या सजेस्ट किया कि ये अगर 1 टन का लोड इस पर आता है तो 1/16 of the load is going to be shared by this pile. Similarly, 1/16 of the load is going to be shared by these piles. So 1/16 plus 1/16 is equal to 2/16. तो 2/16, 1 minus 2/16 is equal to how much? कितना होगा बताइए? 1/2/16. अगर इसका 1/16 ये ले रहा है और 1/16 ये ले रहा है और 1 टन इस पर काम कर रहा है, तो 1 minus 1/16 plus 1/16 minus 1 minus 1. So 1 minus 2/16 is equal to 14/16. Can we write this one? Yes. Am I audible? Yes sir, audible. Yes. So you have to see the idea of the Field's. Field's was a researcher. What he has said, everything is written also. He has given some assumptions that suppose this pile is going to take the 1 ton load. So what he has said that 1/16 of the load is going to be shared by these piles and 1/16 of the load is going to be shared by this pile. Similarly, suppose 1 ton is working on this pile. So 1 ton 1/16 of this is also going to be shared by this and 1/16 of also going to be shared by this. So likewise, this procedure is going to happen there. So 1 minus 2/16 is equal to 14/16. And here Q we can also consider 1. So Q is the nothing but is the load going to be taken by the single pile, multiply by 3 piles are there. So 3 piles we shall multiply 3 into 1 minus 2/16, yani 14/16 into Q. So load taken by the group of 3 piles is equal to 2.625 Q. We can write like this way. Similarly, this idea he has given x-axis, y-axis, or even the diagonal also. You see here these 4 piles are there. So this pile is going to take 1/16. This is also going to take by 1/16, and diagonally also this fellow is also going to take 1/16. So 3/16. That means suppose this 1 ton load is going to come on this pile. So 1 minus 3/16 is going to be shared by other 3 piles. So 1 minus 3/16 is equal to 13/16. So 13/16 and the load carried out by the 1 pile, Q, right? So how much load 1 pile is going to take? We shall multiply by this way, or similarly 4 piles are there. So total load carried out by the group of piles is equal to 4 into 13/16 into Q.
So this will be equal to this way. So this is also very, very important. And this formula, this idea we have to remember. We shall also solve some numericals tomorrow, that how this Feld's rule can be applied to calculate the load carrying capacity of a group of piles. So this idea we have to use in the numericals. Now the another thing is there, Converse-Lavare formula. They are also the researcher. They have also given some formula to calculate the load carrying capacity of the piles, but this fellow has given the how we can calculate the group efficiency of a pile. Sometimes I will tell you tomorrow that the numericals are also asked. Simply you have to calculate the group efficiency of the piles. And by giving the numericals, you can understand all the theoretical parts. It will be more easier for you people. So this Converse-Lavare formula, this group efficiency of a piles, sometimes they used to ask in the exam numericals, that how we can determine the group efficiency of the piles. So what is given there? M is the number of rows of piles. How many rows are there? 1, 2, 3, 4, 5 rows are there. And number of piles in each row, actually it should be in each row. So six piles are there in each row. So M and N, that also we have to know, and we have to incorporate this value. And theta is nothing but theta is equal to tan inverse D by S. D is nothing but diameter of the piles divided by S. S is the spacing of the pile. So theta N M is known, then we can calculate the eta G. We can find out efficiency of the pile groups. We can find out. So this is the formula. So and ultimate load, once you can find out the efficiency, then you can use this one. QG is equal to efficiency, number of piles, and load carried out by the one piles. Your numericals, it is given there. The one pile is going to take the 5-ton load, and the number of piles are this much. Then efficiency, you calculate the efficiency. So first you have to calculate the efficiency, then you can calculate the group efficiency of the total load, ultimate load carrying capacity or load carrying capacity of a group of piles you can find out. So these are the methods which we have to know. Now we can see that the settlement of a pile groups. This is the second topic. जैसे पाइल हम लोग ड्राइव करते हैं, ग्रुप ऑफ पाइल्स ड्राइव करते हैं, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द सेटलमेंट. पाइल कहीं भविष्य में सेटल भी कर सकता है, स्ट्रक्चर सेटलमेंट भी हो सकता है, तो सेटलमेंट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये चीज को हम तो देखें इसमें. So see, suppose you are going to drive a group of piles in sandy soil or granular soil or the cohesionless soil. In that case, what it says that settlement of pile group is found to be many times that of a single pile. Pile groups जो है ज़्यादा settle करता है single के comparisons में, ये देखा गया है in sandy soils में. तो इसकी स्थिति में सिंगल पाइल कितना सेटल होता है, इसको पाइल लोड टेस्ट हम लोग जो डिस्कस किए थे, पाइल लोड टेस्ट में से हम पता कर सकते हैं कि ये सिंगल पाइल हाउ मच इट कैन सेटल. सो सेटलमेंट ऑफ ए सिंगल पाइल वी कैन फाइंड आउट बाय द पाइल लोड टेस्ट. पाइल लोड टेस्ट के जरिए हम निकाल सकते हैं. सो व्हाट इट सेज दैट द रेशियो ऑफ ए सेटलमेंट ऑफ ए पाइल ग्रुप टू द सेटलमेंट ऑफ ए सिंगल पाइल इज कॉल्ड एज ग्रुप सेटलमेंट रेशियो. देखिए ग्रुप सेटलमेंट रेशियो का एक फार्मूला है जो कि FG इज इक्वल टू सेटलमेंट ऑफ ए पाइल ग्रुप डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ ए सिंगल पाइल. अगर सिंगल पाइल का सेटलमेंट अगर हमको पता चल जाए और ग्रुप इफिशियंसी अगर ग्रुप सेटलमेंट रेशियो पता चल जाए, तो सेटलमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पाइल्स हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं. अब देखें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. इसमें यू कैन सी द बेसिक वाज ए रिसर्च वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक फार्मूला. Basic we have not discussed, but IS code method has also used the basic formula for the determination of bearing capacity of shallow foundation. So basic has often the relation between the FG and B by D के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया है, और इससे B is the width of the pile group and D is the diameter of the pile. Diameter of the pile means single pile we can say. So we can see this graph. जैसे ग्रुप सेटलमेंट उसने एक चार्ट बनाया, एक ग्राफ प्लॉट किया जिस पर ग्रुप सेटलमेंट वाई एक्सिस पर रखा और एक्स एक्सिस पर B by D रेशियो रखा. B इज नथिंग बट इट इज द विड्थ ऑफ द पाइल ग्रुप्स. पाइल ग्रुप्स का जो ब्लॉक है, पाइल का जो ग्रुप का ब्लॉक है उसका विड्थ कितना है और सिंगल पाइल का जो है डायमीटर कितना है, B by D का एक ग्राफ प्लॉट किया.
तो इससे ग्रुप सेटलमेंट हम पता कर सकते हैं। इस कैसे पता कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम जो ग्रुप फाइल्स जो फाइल ड्राइव किए हैं ग्रुप के फॉर्म में, तो उसका विड्थ अगर हमको पता है और डी अगर हमको पता है, तो हम ये एफजी पता कर सकते हैं। ग्रुप सेटलमेंट रेशियो पता कर सकते हैं। ग्रुप सेटलमेंट रेशियो इस चार्ट से पता कर लें और सिंगल देखिए एफजी इज इक्वल टू एस जी बाई एस। अगर इस चार्ट से एफजी पता चल जाए और एस वी कैन फाइंड आउट that is the settlement of a single pile using the pile load test, then SG we can find out group settlement of a piles in sand we can determine. So this idea we can use for the determination of settlement of a pile group. Similarly, how we can determine the group settlement in clay soils? Am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir, audible. So let us complete this topic. I think one topic, if it is not going to be completed in that case, we shall go tomorrow. So in clay soil, see, sandy soil, how we can find out the group settlement? यानी हम पूरा पाइल एक साथ सेटल करता है सैंडी सॉइल में हम कैसे निकाल सकते हैं? That we have seen in the previous slides. Now in clay soil, how we can find out? What are the procedures? तो इसमें हम लोग ये देखें, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपका the stresses due to applied load we have already studied in the previous semester. So total load, when the load is going to be applied due to the superstructure on the group of piles, what it says that the total load is assumed to act at a depth equal to 2/3 of the pile length in the case of a friction pile. If friction pile, you can see two figures are there. यदि कोई फ्रिक्शन पाइल्स हमने ग्रुप ऑफ पाइल्स वहाँ फ्रिक्शन पाइल्स का ड्राइव किया है, तो कहता है कि अब उस जो सुपर स्ट्रक्चर का या जो ऊपर से लोड आता है पाइल्स पर, वो नॉर्मली इट स्टार्ट्स एक्टिंग फ्रॉम एट 2/3 डी. D is the total depth of the piles. So that point also you have to study. And this is the pressure distribution diagram. And 2:1 load distribution diagram we have already studied in stresses due to applied load. So in case of end bearing piles, what idea is there? What it says that the load, जो लोड पाइल्स आपने ड्राइव कर दिया उस पर जो ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है, दैट लोड रियली स्टार्ट्स एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द पाइल्स. यहाँ पर होता है, ये देखा गया है बाय द रिसर्च. सो एंड दिस इज द लोड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. So they have a 2:1 load distribution we have already studied in the geotechnical engineering. So you can see this, हम लोग पढ़ा था कि अगर इसका width b है और इसका अगर width length l है, ये b है और l है और हाइट z है, तो कैसे हम फार्मूला डेवलप करते हैं 2:1 लोड डिस्ट्रीब्यूशन में, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो द सेम आइडिया इज देयर. तो इसने ये क्या बोला कि हाउ वी कैन सी लोड इज गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग एट 2/3 डी, फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स वर्किंग. तो उसने कहा कि इस सेटलमेंट अगर पता करना है इस एरिया में कितना सेटलमेंट होगा लोड काम करने से, तो इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर लीजिए. तो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करने के लिए हर लेयर्स का अलग अलग स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस आ रहा है. So how we can calculate the stress? For that one formula is there. Stresses for each layer we can find out by this way. So QG is nothing but the total load acting on this pile group. BG is the width of the pile groups. BG width of the pile groups, and ZI is the depth of the layer from here. यहाँ से I लेयर कितने दूरी पर है, Z1 कितने दूरी पर है, Z2 कितने दूरी पर है, Z3 कितनी दूरी गहराई पर है, और LG is nothing but is the LG, this length is called as LG. So LG length of the pile groups and BG is the width of the pile group. इस पाइल जो आपने जो ड्राइव किया है which may be a square, in that case BG and LG will be equal. If it is a rectangular block is a rectangular, in that case BG we can also find out, LG also we can find out, QG is the total load working on this from the top. So what they have suggested that the QI, the stress at different layers, यहाँ से जब लोड शुरू होता है तो हर लेयर्स का हम अलग अलग स्ट्रेस निकालते हैं. और सो हर स्ट्रेस कितना किस लेयर्स में, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर्स में हाउ मच स्ट्रेस इज देयर, एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस वी हैव टू फाइंड आउट द सेटलमेंट फॉर ईच लेयर, है ना. ये हर लेयर्स में जो जितना स्ट्रेस काम करता है उस स्ट्रेस के चलते कितना सेटलमेंट होता है उसको पता करते हैं, और पता करने के बाद टोटल सेटलमेंट को ऐड कर देते हैं. देन वी कैन फाइंड आउट
the settlement. See, settlement of each layer caused by the stress, increased stress Qi, which may be Q1, Q2, Q3, because we have divided the different layers of the pressure distribution diagram at 2 by 3D in case of friction pile and at D depth in case of end bearing piles. हम लोग पहले slides में देख चुका है. तो delta SI means settlement in first layer, the change in void ratio, चूंकि compressed होगा, layer compressed होगा तो उसका void ratio में भी change होगा, और height of the initial height of the layer which we have considered for the settlement determinations. So thickness of the layer I, उस I जो आपने एक layer लिया है तो उसका कितना जो है thickness है, और change in void ratio कितना है, initial void ratio कितना है, तो हम अगर पता कर लें, एक लेयर्स का सेटलमेंट पता कर लें, तो सभी लेयर्स का सेटलमेंट पता करके जोड़ देंगे, तो उससे हम लोगों को ग्रुप सेटलमेंट ऑफ दी पाइल्स वी कैन फाइंड आउट, राइट. सो कैन वी प्रोसीड फर्दर, और आई थिंक क्या आगे बढ़ें कि अभी बंद करें, क्या विचार है आप लोगों का? आई थिंक बोलिए आप लोग, बिकॉज 5 मिनट्स टाइम, or can we start tomorrow? What we can do? 2 minutes you are saying. How much time you are saying? Because it may take I think 10 minutes time it can take, so let us stop here only. ठीक है? So Yes, sir. Okay, sir. yes. Yes, sir. So what we discussed today, let me brief so that you will understand the group action of piles, how we have to install the piles in case of wall footing or the column footing. If you are not going to install the piles centrally, in that case there is a chance of eccentricity. That means there will be the bending stress generation at the point of connection. Connection means in between the pile cap and the piles, group of piles. So that point also we have discussed, and we have also talked about how we can determine the load carrying capacity of a group of piles in case of sandy swell and the clay swell. And in addition to that, we have also discussed how we can determine the settlement of a pile groups in sandy swell and the clay swells. So these things we have discussed.